Hello and welcome to this English language lesson. Today we are going to learn about present progressive tense. How to form present progressive tense. In this video, we'll go over subject verb agreement for this tense and provide some examples, positive, negative and interrogative examples for this tense to help you understand to use it correctly. By the end of this video, you will have a clear understanding of how to use it correctly in your writing and speaking. Now I'll tell you about subject verb agreement. This tense is used to describe actions that are happening right now or in progress. It is a very good tense to know, especially if you want to talk about actions that are happening right now and that are happening around you. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस जो है वो हमारे उन एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए, उनका इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो काम स्टार्ट हुआ और अभी ख़त्म नहीं हुआ, हाल में जारी है। कोई भी काम हो सकता है। अपना खाना, जैसे कि मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसा कि इस टेंस के नाम से वाज़ेह है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रोग्रेसिव और कॉन्टीन्यू दोनों ही वर्ड किसी काम के जारी होने के बारे में इशारा करते हैं कि काम शुरू तो हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी जारी है। In the present progressive tense, the auxiliary verb must agree with the subject in term of number and person. मैं यहाँ बताता चलूँ कि इस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो इज़, एम और आर हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल में होगा, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हम इस का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट दिस। I am reading a book, you are reading a book. He is reading a book, she is reading a book. We are reading a book, they are reading a book. इन तमाम एग्जाम्पल्स को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि हमने आई के साथ तो एम का इस्तेमाल किया जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है। आई हमारा सब्जेक्ट, एम ऑक्सिलरी वर्ब। रीडिंग ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी का इजाफा किया और बुक ऑब्जेक्ट लगा दिया। मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी के साथ इसका इस्तेमाल और वी दे के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हम कुछ टाइम एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे नाउ, एट द मोमेंट, करेंटली, जो कि बताते हैं कि कोई काम किस वक्त पर हो रहा है, जारी है। सम पॉजिटिव एग्जांपल्स ऑफ दिस टेंस। आई एम ईटिंग लंच राइट नाउ। यू आर स्टडिंग हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। शी इज़ रनिंग इन द पार्क। दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स। इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस is used to describe an action that are happening right now. Negative examples. To form a negative sentence in present continuous or present progressive tense, we simply add not after the auxiliary. Here are some negative examples. I am not eating lunch right now. You are not studying hard for your exams. She is not running. They are not playing video games. In these examples, the negative form of present progressive tense is used to describe an action that is not happening or not ongoing. यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए ऑक्सिलरी के बाद नॉट का इस्तेमाल किया। ऑक्सिलरी इज़, एम, आर के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया। Interrogative examples. To form a question in the present progressive tense, we invert the subject and auxiliary verb. Here are some examples. Am I eating lunch right now? Are you studying hard for your exams?
Is she running in the park? Are they playing video games? In these examples, the question form of present progressive tense is used to ask about an ongoing action. कंक्लूड करते हुए इस वीडियो को हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनाते हुए हम सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग का इस्तेमाल करते हैं, को ऐड करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू remember subject verb agreement and use is with singular subject and are with plural subject. We can use this tense to describe actions that are happening right now and that are ongoing. We can form negative examples sentences by adding not after the auxiliary and can form interrogative sentences by adding auxiliary before the subject. Don't forget this tense to use. Slipped. Its mean practice is very important. Don't forget to practice using this tense in your daily conversations to improve your English language skills. Thank you for watching this video. I hope you found this lesson helpful. Please like, subscribe and share this video as well. If you want to learn present simple tense, you can visit this channel and learn tenses in simple way.